गुड इवनिंग बच्चों, आज हम ओके today we'll be studying unit 2 chapter 6, the poem called the planners. Right? Planner means जो प्लान करता है, person who plans, right? डायरी को भी कहते हैं, जिस डायरी में आप प्लान करते हो, that is also called a planner. Okay, so person who plans, or a document, a book, a diary in which you plan. ठीक है? So before we read the poem, let us learn about the new words in the poem. इस poem में जो भी नए शब्द हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं और फिर हम अपनी poem पढ़ेंगे. ठीक है? Planner माने योजनाकार, नियोजक. The planners decided to replace the old park with a shopping mall. Erase. Eraser कहते हैं ना, जिससे हम मिटाते हैं पेंसिल से लिखा हुआ. Eraser, right? To erase, मिटाना. They erased all signs of the old temple during construction. Okay. Heritage. Virasat. Varsa. Our heritage connects us to the roots. Uniformity. एकरूपता. एक संगता. Together. Uniform. एक जैसे. स्कूल में everyone wears a similar uniform, है ना? सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है. तो यूनिफॉर्म माने सेम, similar. The uniformity of the new buildings made the city look dull. सारी buildings एक जैसी लग रही थी तो it makes the city look dull. Concrete. सिमेंटचे बांधकाम. सीमेंट का जो जैसे रोड के साथ में आप देखते हैं जो पेवमेंट होता है, it is made of concrete, सीमेंट का. Concrete structures are replacing the green fields. Grid. Grids. Sorry, grids. ये जाल लोहे का, इसको कहते हैं ग्रिड. जब बिल्डिंग बनती है या लेंटर डलता है या ब्रिज बनती है, तो these are the grids that are used for construction. Construction grids, इस तरह से, right? इसको कहते हैं grids. The city was built on neat grids. Amnesia, भूलने की बीमारी. The city suffers from cultural amnesia, forgetting its past. Flaws, कमियां. Old buildings had flaws but also carried charm. Regress, पीछे जाना. The poet sees modern progress as a kind of emotional regress.
कवि को लगता है कि हम जितना मॉडर्न हो रहे हैं, वी आर रिग्रेसिंग इमोशनली, इमोशनली हम उतना पीछे जा रहे हैं. रिबट, खंडन करना. The poet tries to rebut the artificiality of the modern world. तो कवि मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे हम आर्टिफिशियली जीते हैं, उसका द पोएट, कवि खंडन कर रहे हैं, राइट? रीबट. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट. You have heard the proverb, plan your work, work your plan. Right? कहते हैं पहले plan your work, पहले plan करो और फिर जो आपने प्लान किया है उसको पूरा करो. Work your plan. कौन बताएगा? What does it mean? Planning of the work is important. Without planning, work cannot be accomplished. Make planning, work according to that plan. Planning and work are two sides of the same coin. कौन बताएगा? अगर हमने प्लानिंग की तो जो वर्क होगा वो कैसे डन हो सकता है? बिल्कुल सही. So that means पहले प्लानिंग इम्पोर्टेंट है. प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. तो इसका, इस प्रोवर्ब का मीनिंग है सी, मेक प्लानिंग एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्लान. वही कह रहे हैं ना, वर्क योर प्लान. पहले प्लान करिए और फिर उस प्लान के हिसाब से काम करिए, राइट? सो मेक प्लानिंग एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्लान. दिस इज योर सी. Now choose the other alternatives from the statements given below which would explain why town planning is essential. किसी भी शहर में प्लानिंग क्यों जरूरी है? Why do we need to plan a city? आपल्या विधानांमधून योग्य पर्याय निवडा जे नगररचना का आवश्यक आहे हे स्पष्ट करतील. राइट? हम जो पढ़ने वाले हैं वो टाउन प्लानिंग के ही रिलेटेड है. तो आपको क्या लगता है, why is town planning essential? To develop city according to guidelines, to get the best city award, to attract tourists, to use and develop the land available in the interest of the citizens. क्या हम अवार्ड के लिए एक सिटी को अच्छा बनाते हैं? नहीं. नहीं, अवार्ड मिल जाए तो अच्छी बात है, बट वी डोंट मेक अ गुड सिटी फॉर अवार्ड्स, राइट? टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, क्या हम टूरिस्ट के लिए सिटी बनाते हैं? नो. टूरिस्ट तो आते जाते रहते हैं, हमें वहां रहना है, राइट? यस. So no, B is no, C is no. To develop the city according to guidelines, कि जो रूल्स बने हैं उस हिसाब से हम सिटी को डेवलप कर सके. यस. यस, कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है तो यहाँ पे कोई नीची बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये दिक्कत है या ये फायदा है. तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस यू डेवलप द सिटी. ए. And to develop, use and develop the land available in the city for the interest of citizens. ये भी yes है. इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं. शहरातील उपलब्ध जमिनीचा नागरिकांच्या हितासाठी वापर व विकास करणे. Yes, no. यस. Last वाला भी yes. So A is yes and D is yes. Okay. Given below are various professions in column A and the nature of work in column B. Match the columns. Anesthetist कौन होता है? जो सर्जरीज के टाइम एनेस्थीसिया देते हैं so that you don't feel pain, right? A person whose job is to give drugs which make a person not to feel pain, especially in preparation of a medical operation. तो जब सर्जरीज होती है, ऑपरेशन होता है, तो उसमें पेशेंट को पेन हो सकता है, तो
इसलिए एनेस्थीसिया देते हैं so that the person does not feel pain. Pharmacist is one who sells medicines. Yeah. A person who's been trained to prepare medicines and sell them to the public. Orthodontist is to do with teeth. Ortho means to do with bones and dentist means teeth and jaws. So specialist in the problems concerning teeth and jaws, orthodontist. Dermatologist, derma means skin. So to do with the skin diseases. Medical study of skin and its diseases. Architect is a person who designs buildings and supervises the process of constructing them. Chartered accountant, उनको हम CA भी बोलते हैं. So a person who's engaged in the profession of accounting and examining the statements and record of accounts. Editor, book का editor, magazine का editor, newspaper का editor. A person who edits content, supervises. A person who is in charge of a newspaper or a part of a newspaper, right? जैसे स्पोर्ट्स एडिटर होता है जो स्पोर्ट्स कॉलम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पेज 3 एडिटर होता है जो पेज 3 गॉसिप एंड न्यूज के लिए इंचार्ज है. So there are different editors in for magazines and newspapers. All right. Here let us come to the poet. Poet Kim Cheng, born in 1965, is a Singapore-born Australian poet. He is of Chinese descent. So he's a Chinese, born in Singapore, living in Australia, right? He's widely regarded as one of the most promising Singapore poets to emerge in the 1990s. उन्होंने खूब सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं, उनकी काफी कलेक्शंस हैं. और ये जो पोम है, the poem begins by telling us what planners do, right? इसका एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं. This will help us understand the poem better. कवी कवितेची सुरुवात नियोजन करते. प्लॅनर्स नेमके काय करतात हे सांगून करतो. कविता जसजशी पुढे सरकते तसतसे आपल्याला समजते की हे नियोजन करते आपली उद्दिष्टे कशी साध्य करतात. कवितेच्या शेवटी या नियोजनाचा कवीवर कसा परिणाम झाला आहे याचे चित्रण कवीने केले आहे. बोई किम चेंग हे वेगाने विकसित होणाऱ्या आधुनिक सिंगापूरबद्दल भाष्य करत आहेत. आपल्या आसपासच्या परिसरातील मानवी संवेदनांचा ऱ्हास झाल्याबद्दल ते खंत व्यक्त करतात. जुन्या शहराशी असलेल्या आपल्या भावनिक बंधांच्या आठवणीत ते रमतात. जेव्हा आपण आपल्या सभोवताली अशा प्रकारचे आधुनिकीकरण पाहतो, तेव्हा त्यांच्या शब्दांचे पडसाद आपल्याही हृदयात उमटतात. आधुनिकीकरणाच्या कठोर वास्तवामुळे आपले हृदय बधीर झाले आहे. असे जेव्हा कवी कवितेच्या शेवटी सांगतो, तेव्हा आपल्याला त्याची नक्कीच सहानुभूती वाटते. या कवितेचा मुक्तछंद फ्री वर्स हा प्रकार कवीच्या भावनांच्या मुक्त अभिव्यक्तीसाठी अत्यंत योग्य ठरला आहे. ठीक है, तो ये है कॉन्टेक्स्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोम. All right. So the poem, The Planners by Kim Cheng, right? Kim Cheng के बारे में हम पढ़ चुके हैं. He is a Singapore-born poet who loves old heritage. और जैसे जैसे सिटीज बदल रही थी 1990s में, तो उनको लग रहा था कि
सुंदर सुंदर घरों को तोड़कर ये बोरिंग बिल्डिंग्स बन रही हैं. So what is this poem about? Imagine your favorite childhood playground is being destroyed to build a shiny, perfectly square, boring shopping mall. How does it feel? That is exactly how the poet feels about modern Singapore. तो कह रहे हैं कि बहुत ही बोरिंग बिल्डिंग्स, सुंदर सुंदर घरों को तोड़कर बोरिंग बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, which he does not like. क्या कहते हैं वो? कहते हैं प्लानर्स को they want everything perfect, shiny and calculated. वो नेचर, पेड़ों को काट रहे हैं, गार्डन्स को, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड दे फील हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड दे फील नो गिल्ट एंड इमोशन. उनको सब चीज परफेक्ट चाहिए, शाइनी चाहिए, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इफ हिस्ट्री इज बीइंग इरेज्ड. राइट? एक बार इसको समझ लेते हैं. ते त्यांना सर्व काही निर्दोष, चकचकीत आणि मोजमापावर आधारित हवे असते. ते निसर्गाला पुसून टाकतात आणि जुना इतिहास नष्ट करतात. त्यांच्या मनात कोणतीही अपराधीपणाची भावना किंवा संवेदना नसते. Right? Or poet, how does the poet feel? He feels sad, helpless and numb. He feels bad that the old city is being destroyed. कि पुराना जैसे शहर था वो तोड़ा जा रहा है. He is not happy. He hates the fake manufactured new history. Okay. The core protest against the unstoppable force of modernization replacing our human heritage with a cold concrete jungle. He says the beauty of natural homes, old homes are being replaced by concrete jungle. इसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं. So he is not happy with this. Okay, this is the first stanza. They plan, they build. All the spaces are gridded, filled with permutations of possibilities. The buildings are in alignment with the roads, which meet at the desired points, linked by bridges, all hang in the grace of mathematics. So, perfect buildings, right? Perfect grids, everything by perfect design. They build and will not stop. Even the sea draws back and the skies surrender. तो उनके अगेंस्ट, प्लानर्स के अगेंस्ट, धरती, आसमान, सी, everything and everyone obeys the planners. जैसा प्लानर्स चाहते हैं वैसा ही वो बिल्ड करते हैं. So he says, city planners design the city like a perfect math equation. Every road and bridge is strictly calculated. And they are so powerful that even nature gives up and surrenders to them. उनके सामने नेचर भी हार मान लेता है. They are so powerful. Let's look at the translation of this. शहराचे नियोजन करणारे शहराची रचना एखाद्या अचूक गणिती समीकरणाप्रमाणे करतात. प्रत्येक रस्ता आणि पुलाचे मोजमाप अत्यंत काटेकोरपणे केलेले असते. त्यांची ताकद इतकी प्रचंड आणि धाक निर्माण करणारी असते की निसर्गही, समुद्र आणि आकाश त्यांच्यापुढे हार मानतो आणि शरणागती पत्करतो. Okay.
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टैंजा. ठीक है. स्टैंजा 2, इरेजिंग द पास्ट. क्या कर रहे हैं? जो भी पास्ट में था उसको मिटा रहे हैं. They're trying to make things more perfect, more beautiful, but they are erasing the past. Erasing the past means past को मिटाना, भूतकाल को मिटाना. They erase the flaws, the blemishes of the past. Blemish माने दाग, धब्बे. कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो दाग हैं, वो धब्बा हैं, उनको वो मिटा के बड़ी बड़ी सुंदर और सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स बना रहे हैं. Knock off the useless blocks with dental dexterity. All gaps are plugged with gleaming gold. The country wears perfect rows of shining teeth. So everything looks perfect in harmony. और कोई घर पुराना हो रहा है या सिंपल लग रहा है या it's not so pretty, so they break it and replace it with something shiny. The planners see old historical buildings as ugly flaws or blemishes. They knock them down with steady, precise hands of a dentist pulling out bad teeth. जैसे खराब दांतों को डेंटिस्ट निकाल देता है, ये प्लानर्स क्या कर रहे हैं? पुरानी बिल्डिंग्स को निकाल के, तोड़ के, they are replacing them with shiny new buildings. So the city looks perfectly bright but feels completely fake. Okay. Making us forget. Anesthesia, amnesia, hypnosis, they have the means. They have it all, so it will not hurt. So history is new again. तो एनेस्थीसिया में क्या होता है? हमें पेन फील नहीं होता. एमनीसिया से क्या होता है? हम भूल जाते हैं. Hypnosis is again when you're hypnotized, you don't know what is happening. So he says, अलग-अलग तरीके से they make us numb so that we don't feel, we don't understand what is happening, and we believe the new history. The planners use shiny new things to brainwash the citizens. They numb our pain so we don't feel sad about losing our old heritage. By making us forget the past, they create a fake new history that they can control. The broken heart. The piling will not stop. The drilling goes right through the fossils of the last century. तो कोई चीज पुरानी है, सुंदर है, महत्वपूर्ण है, valuable है, but they keep destroying it. But my heart would not bleed poetry. Not a single drop to stain the blueprint of our past's tomorrow. He says the buildings are so boring, so uninspiring, उनको देख के कभी भी मैं अच्छी poems नहीं लिख पाऊंगा. Because there is no warmth in those buildings. So he says, my heart is broken. I will never be able to write poetry on those buildings again. So he says, endless construction drilling destroys deep history. The poet feels so helpless and numb that his heart can't even bleed poetry anymore. He refuses to write a single word that will decorate their fake planned future. He says, अब जो ये buildings हैं वो इतनी boring है और uninspiring है, I will never be able to write poetry about them. Dentist का metaphor उन्होंने क्यों लिया है? Dentist क्या करता है? दांत पे जो दाग धब्बे होते हैं उनको मिटा देता है और
उनको रिप्लेस कर देता है गोल्डन टीथ से या बिल्कुल वाइट टीथ से। वही वो बिल्डिंग्स के साथ कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स, टूटी बिल्डिंग्स, किसी का प्लास्टर उतर रहा है, उसको तोड़ फोड़ के सुंदर बिल्डिंग से, नई बिल्डिंग से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। डेंटल डेक्सटेरिटी मतलब बिल्कुल, जब आप दांत लगवाने जाते हैं अगर वो टेढ़ा लग गया तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, राइट? इट हैज टू फिट द एम्प्टी स्पॉट एग्जैक्टली। सो सेम विद बिल्डिंग्स, जब वो बिल्डिंग बीच में कोई बिल्डिंग तोड़ते हैं तो उस जगह को बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसिशन से उसको रिप्लेस कर देते हैं विद अ न्यू बिल्डिंग, राइट? So the new city looks perfect, but it is artificial and lacks a soul. Okay. ये तीनों वर्ड्स हमने पढ़े थे। एनेस्थीसिया सर्जरी के टाइम देते हैं so that we don't feel pain. पोम में इसका क्या मतलब है? The planners numb the citizens so that they don't feel the pain of losing their heritage, their past. Amnesia is memory loss, forgetting the past. The planners make people forget the old city ever existed. पुरानी चीजों को वो लोग भूल जाते हैं थोड़े दिनों बाद कि यहाँ पे पहले कुछ और था। Hypnosis is a trance-like state where you don't realize what's happening. The planners trick citizens into believing that the modern city is perfect, right? ये दो linguistic devices are permutation of possibilities, PP, alliteration. The sea draws back and the skies surrender. यहाँ पे the sea is being treated as a person and the sky is also being treated as a person. So this is called personification. This is oxymoron. Oxymoron is जब दो opposite words को एक साथ लगाया जाए. Past is पिछला, tomorrow is future. So blueprint of a past tomorrow, right? Grace of mathematics. ये sarcastic है, ये math का praise नहीं है. This is to say that they exploit land without caring for human feelings, right? ये हम discuss कर चुके हैं. Permutation is various possibilities. Blemishes is दाग, धब्बे, ugly marks. Fossil is remains of an animal hardened into rock. So here it stands for history. Okay, dexterity is perfect. Exactness, the skill to be able to do something precisely. Okay. All right, ये सब हम discuss कर चुके हैं. Poetic style is free verse. Theme is the unstoppable force of modernization, और modern buildings के चक्कर में we are destroying historical heritage and nature. अपने आसपास आप देखते हो villages हैं, forests हैं, they are being destroyed for high-rise buildings. इसी को लेकर उनकी शिकायत है इस poem में. And his message is that progress is necessary, but we should not erase our human connection to the past. And we should. बोलो बेटा. क्या मैम? आप कुछ कह रहे हैं? नहीं तो म्यूट करो बेटा फिर. Okay. Progress is necessary, but it should not erase human connection to the past. हमारी history भी important है, right? And this is your quick revision sheet. इसमें characters हैं, वो planners हैं, और poet है जो helpless protester है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि planners अपनी मर्जी से पूरी city को design change कर रहे हैं. Blueprint is perfect. Fossil is old and has historical significance, historical importance. Metaphor है इसमें dentist,
जो पुरानी बिल्डिंग्स को निकाल रहे हैं, जैसे डेंटिस्ट पुराने दांत निकालता है, डॉक्टर हमें सुन करता है सर्जरीज के लिए, he numbs us. So here the planners are numbing us to not realize what we are losing. He says, I will not write poetry to celebrate the new city. Okay, now that's our poem. Let's go to the questions that we have here. Read the poem and complete the web about the activities that planners do. Planners क्या क्या करते हैं? Planners plan, planners drill, planners rearrange houses and they kick aside old buildings. वो grids लगाते हैं, blueprints बनाते हैं, they make landmarks, they destroy memories, and they erase things that have a past. So that is all that planners do. Okay, go through the poem and state whether the following statements are true or false. Planners plan to construct buildings wherever they find place. Is it true or false? This is true. Planners take public consent for the alterations they make in the old structures of the city. किसी भी बिल्डिंग में चेंज करने से पहले प्लानर्स लोगों से पूछते हैं. True or false? False. They act without public input. वो लोगों से नहीं पूछते what is it that you want. The planners do what they think is right. Planners are concerned about the environment. False. They ignore the environmental impact. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता environment पे उसका क्या असर है. Planners make perfect plans and calculate their profit. True. Planners deliberately find drawbacks in old planning. True. Newly planned city looks modern and beautiful. False. वो कहता है मॉडर्न है बट वो बहुत ही लाइफलेस और आर्टिफिशियल है. इट डज नॉट लुक ब्यूटिफुल. ही इज नॉट हैप्पी विद द वे ओल्ड the planned city looks. Planners paint charming pictures to influence citizens. This is true. कहते हैं मीठी मीठी बातें और उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि हमारी सिटी इतनी सुंदर हो जाएगी और इतनी अच्छी हो जाएगी. So they sell charming pictures, dreams. They entice the citizens to believe in their plans. Planners make changes so the citizens do not recognize landmarks. True. तो पूरी सिटी उन्होंने चेंज कर दी, तो वहां पे जो भी पुराने लैंडमार्क्स थे, they are people don't remember them now. Right? Now, the blueprint of our past's tomorrow. To go through the poem and write the lines which support this thought. पहला है, the buildings are in alignment with the roads that meet at desired points. Okay. Next है, erase the flaws, the blemishes of the past. History is new again. The planners have it all, so it will not be missed. They build and will not stop. Even the sea draws back and the skies surrender.
Anesthesia, amnesia, hypnosis. They have the names. Right? So these are some lines from the poem. इस पे आते हैं. The term anesthesia in the poem means the planners give beautiful pictures of the new modern city. Now find out what amnesia and hypnosis are in the given context. हमने स्टडी किया था ये 3 टर्म्स का. ये anesthesia is numbing pain so you don't feel pain during surgery. Right? The planners numb the citizens so they don't feel the pain of losing their heritage. Amnesia is memory loss, forgetting the past. And जब पुरानी buildings टूट जाती हैं, नई buildings बन जाती हैं, people forget about the old buildings. Hypnosis, trance-like state of mind control. The planners trick citizens into believing the modern city is perfect. तो लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है and they start believing whatever the planners are telling them. Pick out the statements which aptly depict the theme of the poem. So what are the themes of the poem? Theme of the poem is the speaker memorizes the past, not so much, right? He describes the unstoppable force of modernization, yes. This is the theme of the poem. He talks of replacement of natural environment by concrete jungle, yes. The poet proposes to stop modernization, no. The poet laments helplessly, true, right? And he memorizes the past is wrong, and the poet does not want modernization to stop. ये भी wrong है. What he says is कि हमें balance करके सोच समझ कर करना चाहिए. We should not go be extremely practical. Right? Okay. The tone of the poet is sarcastic. When he writes all the spaces are grid is, he intends to indicate the efforts made by the planner. So he's saying, जब वो बोल रहे हैं planners के बारे में, he is being sarcastic. वो उनकी praise नहीं कर रहे हैं. और भी sarcastic lines है poem में. वो कौन सी हैं? The blueprint is perfect. Even the sea draws back and the skies surrender. Erase the flaws, the blemishes of the past. History is new again. Anesthesia, amnesia, hypnosis. These are some sarcastic lines in the poem. Write an appreciation of the poem, write a summary of the poem. तो summary और appreciation हम last में करेंगे. Read the first and second stanza. Okay, permutation, combination, figures of speech हम कर चुके हैं. Extended metaphor of dentistry भी हम discuss कर चुके हैं. Okay. ये figures of speech वाली table हम अभी कर लेते हैं. Okay. ये हम कर चुके हैं that planners are dentists, land and sky is the mouth and the buildings are the teeth. Personification ये हम डिस्कस कर चुके हैं. C draws back, alliteration, PP, permutation of possibilities, oxymoron, pristine perfect rose.
और metaphor dentistry का we have discussed these. Okay. Now let us go discuss the summary of the poem. Summary हमने बहुत शुरू में ही discuss की थी. We can read this again. The poem The Planners by Kim Cheng criticizes modern city planning that destroys the natural and cultural identity of a place. The poet feels that everything is measured, planned, aligned, leaving no room for flaws or memories. History and nature are erased by architects and city developers. Using extended metaphors like teeth and drilling, he compares this artificial beautification to painful dental procedures. The poet laments that in such a mechanical environment, even poetry has no place. और हमने डिस्कस किया था कि अप्रिसिएशन में आपके पोम का नाम आता है, टाइटल आता है, पोएट आता है, थीम आता है. दिस इज इन लाइन्स. यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ paragraph. When I share the resource with you, you will have the summary of the poem here. Okay. इसमें बीच बीच में जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनका मैंने हिंदी और मराठी में मीनिंग दिया हुआ है. राइट. The poem is a sharp critique on excessive urban planning and modernization. Kim Cheng expresses his discomfort at how modern cities erase their past in the name of development. ये वाली समरी आपको डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगी और ये नए वर्ड्स हैं जो हमारे टेक्स्ट में हैं. और ये पोम का अप्रिसिएशन आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज इन पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स आपके अप्रिसिएशन में होने चाहिए. राइट. These are answers to the questions at the end of your text. यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे summary is given in very short. ठीक है. और ये हम कर चुके हैं. 4 lines. You can write your own 4 lines on lost nature. You can write dialogues between two friends on how a village has changed. ये dialogue writing है. And then 5 developed Indian cities. There is a question in your book about developed cities. At least 5 cities in India that are considered developed. So it's your Delhi, Chennai, Mumbai, Bangalore, and what else? Pune, right? These 5 are considered to be the 5 most developed cities of the country. So that is the end. Class ke baad you will get this resource and you will get this resource जो हमने revision पढ़ने के लिए use किया था, right? इसमें you will have your summary, you will have your explanation, you have the theme, and you have the figurative devices. ये भी आपके साथ, it will be shared with you at the end of the class. All right, बेटे, आप ब्रेक ले लीजिए. Your next class. Bye, ma'am. Bye, बेटे.